Assalamu alaikum friends, how are you all? Welcome to Learn with MK. I am Mariya Khan, your social science educator. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQs पढ़ेंगे फ्रॉम जियोग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है The resources which can be used directly without any modification are called. आपके ऑप्शंस हैं A. Non-renewable resources, B. Renewable resources, C. Sustainable resources, and option number D is both B and C. And the correct answer is option number D, both B and C. दूसरा क्वेश्चन है The machinery and vehicles are example of. आपके ऑप्शंस हैं A. Human made resources, B. Human resources, C. Sustainable development, and D. Conservative resources. Correct answer है option number A. Human made resources. Friends, next question है question number 3. Which one of the following is principle of sustainable development? And your options are option A, balance between use and conservation of resources, B, cut the trees, C, use vehicles that cause pollution, D, allow industries to carry on illegal mining. And the correct answer is option number A, balance between use and conservation of resources. Let's come to the next question. Question number 4 है which of the following is an example of human resources? Option A, forests, B, latest technologies, C, people, D, birds and animals. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, people. Fifth question है the example of non-renewable resources are, and options हैं A, petrol and gases, B, solar energy, C, wind energy, D, smartphones. And the correct answer is option A, petrol and gases. Sixth question है a substance or object becomes a resource because of its, option A, features, B, utility, C, price, D, renewability. और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूटिलिटी. क्वेश्चन 7 है द रिसोर्सेज विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड आर, और आपके ऑप्शंस हैं ए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सी, सोलर पावर, एंड ऑप्शन डी, ह्यूमन रिसोर्सेज. और इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज हैव मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू? ऑप्शन ए, मेटल्स, बी, डेजर्ट रीजन्स, सी, रोड्स एंड डी, लैंडस्केप्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेटल्स. 9th क्वेश्चन है improving the quality of human lives is an example of, और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, बी, ह्यूमन रिसोर्सेज, सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी, यूटिलिटी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 10th and last question is which of the following is an example of renewable resources? And options are A, solar energy, B, cutting of trees, C, diesel usage, D, killing animals. Correct answer है option A, solar energy. Next question is your homework. आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में. और ये क्वेश्चन है which one of the following does not make substance a resource? Options A, utility, B, value, C, quantity, D, none. और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. Till then, take care, keep learning, keep smiling, and bye bye.